Hello everyone, this is Rabbia. In this video, we will solve question number 3, part 6 from exercise 6.2, chapter 6. Function of t is equals to 1 by 2 tangent square t plus ln cos t. Let y is equals to function of t differentiating with respect to t. So dy over dt is equals to d by dt of 1 by 2 tangent square t plus ln cos t. dy over dt is equals to 1 by 2 is as it is tangent square t. तो सबसे पहले पावर की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट t. नाउ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास sec स्क्वायर t एंड देन इज t का डेरिवेटिव. सो t का डेरिवेटिव इज 1. ओके, प्लस ln cos t. तो ln का हमारे पास किस तरीके से निकलता है 1 over cos t, देन इस cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन t एंड देन t का डेरिवेटिव इज 1. सॉरी, मैंने ब्रैकेट जो है ना गलत जगह लगा दिया, यहाँ पे आई है. ओके, सो नाउ dy over dt, 2 से 2 कैंसिल, tangent t into sec square t minus sin t over cos t. So dy over dt is equals to tangent t into sec square t minus sin t over cos t is tangent t. dy over dt, tangent t is common and remaining sec square t minus 1. Now dy over dt is equals to tangent t, sec square t minus 1 is tangent square t. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर t. इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो सेक स्क्वायर t माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर t के. सो dy ओवर dt इज इक्वल्स टू टेंजेंट क्यूब t.